दोस्तों ये सूख गई है, क्या कर सकते हैं इसकी। अब हम दोबारा असेंबल करेंगे ताकि एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो और व्यूअर्स आपको भी ऐसे है जैसे खरबूजे को सबसे लगाई होती है। दूसरा भी खाएगा कौन जी, क्यों जी?
कैसे हैं आप सब? क्वारंटाइन के मजे ले रहे हैं आप? बड़ी मेहनत वाला काम है, इतना छोटा काम नहीं है। काफी रहता है। जब तक फिल्टर लाजमा है, हम इसको सेंड करते रहेंगे। तो लें जी दोस्तों, इसकी बेड सेटिंग खत्म हो गई। तो अब इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी सूखे रेग माल से जो है ना, इसकी जो है सेंडिंग करेंगे। तो उसके बाद जो वायर्स रह जाएंगे उनमें मटेरियल भर के ऊपर से एल्फी लगा देंगे। मटेरियल भरेंगे हम, लकड़ी का पूरा जो होता है वो भरेंगे, तो फिर उसे और एल्फी हम लगा देंगे। और फिर सारे को जो है ग्लू एल्फी सारे को मारेंगे, सारे एरिया पे जितनी शार्प है, ताकि शार्प से इतना सेट हो जाए। चलें इसको छोड़ देते हैं फिर सूखने के लिए, और फिर एक मतलब चेकिंग कर लेते हैं।
यहाँ से टेढ़ी लग रही है चीज। जब ये सेट हो जाएगी तब ये सूख जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। फिर उसको हम क्या सैंडिंग करेंगे ताकि ये भी सेट हो जाए। तो दोस्तों ये स्टिक का सैंडिंग का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहा है कि बस ये हिस्सा बाकी रहा है कि इसको सैंड करते हैं। फिर इसके बाद इसकी हम पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग नेक्स्ट वाले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि कैसे की जाती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले सैंडिंग खत्म करते हैं इसकी। चलिए सेटिंग बड़ी स्टेप बाय स्टेप की है तो बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग हो गई इसकी और टेपर भी हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो पेंटिंग का होगा और पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। चलिए यही पर रगड़ाई करेंगे इसमें। इस पे एपॉक्सी की फिनिश बड़ी जबरदस्त आई है।
स्टैंडिंग बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप की है तो खुद कितनी अच्छी आई है। स्टैंडिंग जब भी करें स्टेप बाय स्टेप करें, एकदम सारी की स्टैंडिंग में करें। ये बिल्कुल 0 ग्रेड का सैंड पेपर है, ये मैंने खुद तैयार किया। पाइप काट के इसके अंदर जो है सैंड पेपर जो है मैंने फिक्स किया। ताकि टेपर करने में भी आसानी हो। गोल भी, क्योंकि हमारे पास टूल तो कोई नहीं है, ना मशीन नहीं है, तो मैनुअली करेंगे। खुद ही बनाई है अपनी मेहनत आपके तहत। पेपर भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी पूरे की रुपड़ाई मारते हैं ताकि सारा इधर से कोई रह जाए हिस्सा वो भी जो है उसकी भी स्टैंडिंग हो जाए, ताकि पेंटिंग के लिए भी जो पेंट हम यूज करेंगे तो पेंट करेंगे तो उसके लिए भी जो इसकी सतह है वो रफ हो जाए ताकि पेंट जो है अच्छी तरह
बड़ी मेहनत का काम है जी, मैंने ये कर दी। तो पेंट करने के बाद फिर हम इसका जो है केस भी तैयार करेंगे। फिर बड़ा मजा आएगा। लॉकडाउन में फिर ऐसे ही काम होता है। आप भी घर रहा करें, थोड़ा सेफ रहा करें, बाहर बहुत कम जाया करें, क्योंकि आपको पता कोरोना चल रहा, तो खुद भी महफूज है तो दूसरों को भी महफूज है। क्रैच और तो ये हमारी तैयार हुई इसकी। अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट इसको हम पेंट करेंगे।